Okay, mi nombre es Bob. My name is Bob. Okay. Now you will say each day I drive my kids to the school. Matlab I might take my kids to the school. It means every day. हाँ, So speak up. Todos todos, los días. todos, Every day. Todos los días. Llevo. We have verb llevar. So we have ये बार llevo. ये बार मीन्स ले जाना. Llevar is to Take. carry करना basically. तो llevo. Yeah. Yes, I take. Todos los días llevo. So mi nombre es Bob. Okay, todos los días llevo a mis hijos. Llevo every day, todos los días, every day, todos los días llevo Todos a los mis días hijos. llevo a mis, Yes, a hijos. mis, a mis. Miss is my kids. बहुत सारे kids. If you have a lot of kids, that is miss. Miss hijos a la escuela. A la escuela. Escuela. So todos los días, every day. I'm saying every day. Todos Todos los días llevo a mis hijos hijos y a la a la escuela. escuela. Is it clear to you? Now speak after me, please. Speak up, please. Speak up. Yeah. Hmm. Okay. Mi nombre es Bob. Todos Mm-hmm. los días llevo a mis hijos a la escuela. Very Mi good. nombre es Bob. Mi nombre es Bob. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Exactly. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Yes. Is it clear to you? Clear? Clear? Todos. एक second, please. Todos los días. Speak after me. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Todos Yes. los días llevo a mis hijos a la escuela. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Escuela. Todos los días. Exactly. Exactly. Escuela. एक second hold करना please आप एक second. हाँ, okay. Todos los días. Repeat after me. Mi nombre es. Speak up please. Mi nombre Mi es. nombre es Mi nombre. Todos los días. Mis hijos. Todos los días. Mis hijos a la escuela. Speak after me please. Mi todos nombre los días. es. Mi nombre Every es day. Bob. Yes. Todos los días a mis hijos a la escuela. इसको read on करो. इसको read on करो please आप. इसको read on करो please. No, mi nombre es Bob. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Todos los días. एक सेकंड बस आप एक सेकंड होल्ड करना है. एक सेकंड आप होल्ड करना प्लीज. ठीक है, एक सेकंड प्लीज. इसको आप पढ़ते रहो. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Mi nombre es Bob. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Todos los días llevo a mis hijos a la escuela. Is it clear to you? कि वो कह रहे हैं कि todos los días, every day ये वो मतलब ये बार is जो carry ये वो mis hijos a la escuela. Every day I take my kids to the school. So repeat after me. No, mi nombre es. Mi nombre es Bob. Todos los días los días llevo a mis hijos a la escuela. Is it clear to you? Yes. अब आप कहते हो कि my daughter, for example, okay, let me write it down also, because we are doing a conversation, my daughter, because obviously with the help of this conversation, you will come to know son, daughter. Is it clear to you? My daughter, mi hija. Hiko we have son. Hiko is my son. Daughter is Hika. Hika, mi hika goes. हमने करा था ir conjugation. करा था हमने ir conjugation. तो हमने क्या किया था? वा, yo voy, tú vas, él, ella. Yes.
एलिया to, conjugation है ना वहाँ. yeah, L, yeah. Okay. Yo voy Tu vas, to एलिया was, va. yes, yes, yo voy to Mi was, hija, my yeah, daughter va my daughter. a una escuela. 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 Mi hija, मतलब my daughter goes to a school that Mi hija, that is very far away from our house. Que esta, that is हमेशा que esta use कर, que esta, que is my dad, estar verb is esta, yo yes, estoy, tú, que está yes, yes, lejos, yes, lejos, far away, lejos de nuestra is my our, nuestra casa. Because this is something like a translation. You will come nuestra is our, not far. nuestra, we have nosotros. So nuestra, we have nuestra. Why nuestra? Because अगर आपका बिल्कुल ध्यान समझना, कासा हमारा क्या है, फीमेल है, ला कासा होता है, ला कासा, राइट. मैं बोल रहा हूँ अवर हाउस. ओके, अगर मेरा कोई भी चीज फीमेल है दैट इज nuestra, और अगर मेरा मैस्कुलिन है दैट इज nuestro. इज इट क्लियर टू यू? Nuestra means our house. अवर Our हाउस. house is casa. हाँ, कासा इज हाउस. देखो बिल्कुल ध्यान समझना, वी हैव टू टाइप ऑफ अवर. वन इज nuestra एंड वन इज nuestro. अगर मेरा कोई भी चीज हाउस, जैसे मैं करूँ अवर हाउस, दैट इज अ फीमेल, दैट इज nuestra. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई मेल, जैसे लिब्रो होता है, लिब्रो अवर बुक, तो मैं लगाता nuestro libro, क्योंकि libro इज माय मैस्कुलिन. इज इट क्लियर टू यू? मैंने समझाया था ना आपको कि वी हैव ओ एंडिंग दैट इज अ मैस्कुलिन, ए एंडिंग व्हिच इज अ फेमिनिन. इज इट क्लियर टू यू? Yeah. राइट. सो बिल्कुल ध्यान समझना, अवर, अर, अर हाउस, nuestra, speak up, nuestra and Nuestra. nuestro. Two type of nuestra and nuestro. Nuestra we have used for a female noun and nuestro we use for a male noun. Is it clear to you? Yeah. Nuestra. Clear? That's far from our house. Our house means nuestra Casa, casa. lejos is my far, lejos. तो मैं क्या कह रहा हूँ, मी हिखा वा आ, my daughter goes to, मी हिखा वा आ una escuela, my daughter goes to a school. escuela, देखो इससे क्या होगा, आपको आर्टिकल्स हमने किया una escuela, una, un, हमने किया ना uno, una, Yeah, yeah, yeah. Una, ठीक है. mi hija, yeah, my आपको ना daughter मैं बार बार, goes yes, to school. Una means a. yes. So whatever videos you have, आपको हर एक वीडियो को 10 टाइम्स दोबारा देखते रहना है, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस होगा आर्टिकल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे. जैसे लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका वीडियो आपको प्रॉपर Yeah, देखना. यू शुड ठीक वॉच है. दिस वीडियो बिकॉज एंटायर डे आप उसको देखो, यू विल कम टू नो. सो मी हिगा वा आ una escuela, my daughter goes to school. Okay, which is que está lejos, which is que está lejos de nuestra casa. Is it clear to you? This is clear. Yeah. Clear? So let's speak up, please. Let's speak up, please. Mi nombre es, my Mi name is. nombre es Bob. Todos Todos los los días días. llevo a mis hijos a la escuela. Mi hija va a una escuela que está Que lejos está de, que nuestra, está lejos de nuestra nuestra casa. casa. Is it clear to you? Yeah. Okay. अब आप लिख रहे हो, it takes 30 minutes to get there. It takes 30. अभी मैं वो काउंटिंग करवाऊंगा. I will explain to you counting also. Is it clear to you? Okay. Yeah. Is it clear to you? See, it is very Yes. important to understand what I have to use with this. What I have to use with this. Is it clear to you? So now, if I'm saying, one second, where is it gone? Here. There's a notepad here. It takes, let me write it down. It takes 30 minutes to get there. If I'm saying, it takes 30 minutes to get there. Tarda.
Tarda 30 is 30. 30 minutos en llegar. Llegar is my verb to arrive. Llegar. Speak up. Llegar. Arrive. See, But why are we using this arrive here? because sense dekho. What is the sense? Because the language, we cannot go for a literally translation. The language, we cannot go for a literally translation. So in Spanish, It takes me, right, to 30 minutes to reach, to arrive there, to arrive. Is it clear to you? okay. So I'm saying tarda because we have verb tardar. Mhm. Is it clear to you? Tarda 30. 30 is 30. Tarda, tarda 30 minutos, 30 minutes to get there. Simple. En llegar. Mhm. En llegar. Is it clear to you? I'm saying tarda, repeat after me. It takes like 30 minutes to get 30. मैं वो counting कल करवाऊंगा. ठीक है? So 30. Yeah. 30 is your 30. 30. Speak after me. 30. 30. So Tarda, yes. Now, tarda 30 minutos yes. देखो en देखो ध्यान से समझना. llegar. मैंने यहाँ पे तारदार वर्ब क्यों लगाई है? बिकॉज तारदार वर्ब में कहाँ लगाता हूँ? वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तारदार. तारदार verb is something like to delay, to take a long time. It takes. Whenever you're asking, because this is a concept of the language. This is a concept of language to, delay, to take a long time, be long, be slow in doing something in terms of time. जैसे मैं बोलूँ कि it take me 30 minutes, बहुत लंबा time लगता है, take me a long time. So over there, I have to use तारदार verb. क्योंकि लैंग्वेज में, Okay. स्पेनिश में, वी हैव अ सेंस ऑफ द वर्ब. येगार को मैं बहुत जगह यूज भी करता हूँ इन टर्म्स ऑफ अराइव में भी, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेंस में भी, राइट? ठीक है. सो दिस इज द सेंस ऑफ द लैंग्वेज व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. तारदार. नाउ तारदार इज समथिंग लाइक टू डिले. टू, अब आप समझो इस बात को कि तारदार इज समथिंग लाइक टू डिले. ओके, to take a long time, be long, be slow in doing something. Okay, is it Okay. clear to you? Because this is a tool wherein you are learning a language. So Tardar, your verb is your tool basically. Is it clear to you? Mhm. Yeah. Is it clear to you? Yeah, Clear? this is clear to me. So Tardar मैं कह रहा हूँ कि it takes me. तो मैं क्या बोलूँगा? Tarda 30 minutos, minutes en llegar to get there. Tarda. Is it? तो कहीं भी आप ऐसा सेंस यूज करो कि it takes me 40 minutes, तो over there you have to use, because delay, to take a long time, you have to use Mhm. tardar verb. Is it clear to you? Yeah. Tardar. So it would be tarda 30 30, minutos 30 minutos, 30 minutos minutos en llegar, en llegar. en llegar. Is it clear to you? Llegar means to arrive. Correct? Exactly, exactly. Okay. Is it clear to you? Yeah, clear. एक बार So दोबारा. now here I understood there is a sense. Suppose if you are reaching somewhere, so Mhm. that will be considered as arriving. Yes, exactly. Is it clear to you? Then I will say, then I take my son to his school. Then I take the llevar is my verb, llevar. Okay. Luego, then, luego. Speak after me, luego, then. Luego, Because, luego. see, language is all about, you have to understand this thing. Okay. So, luego, llevo, I take. Llevo, llevar, llevo. A mi hijo, a su, his. His is my su. A su escuela. So I'm saying, luego llevo a mi hijo a su escuela. Is it clear to you? Asu means Su is my his. Su. Su. so, Su is my his. Is it clear to you? yeah. So what I'm saying, tell me. I'm saying because su.
Su is my his and her. So I'm saying then I take my son to his school. Luego then. ये ना आप देखो every ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. मैं हर एक सेशन आपको रिकॉर्ड वाला भेजता हूँ, राइट? Yeah. तो आपको उसका पूरा प्रैक्टिस करना है. लैंग्वेज में क्या होता है कि जो हम इंटेंसिव सेशन कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एबीसीडी एंड मंथ ऑफ द वीक एंड डेज ऑफ वीक. वो तो हमने अभी किया ही नहीं है, और वो तो हाफ एन आवर का काम है सिर्फ. सी वी आर डूइंग समथिंग लाइक इंटेंसिव सेशन. क्योंकि मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि जब आप इसकी रिकॉर्डिंग 20 बार देखोगे, आपको ये सेंस अपने आप समझ आएगा. क्लियर? तो ये समझ आता भी है. Then I take my son to his school. Luego, then llevo a mi hijo a su escuela. Then I take my son to his school. Luego llevo a mi hijo a su escuela. Is it clear to you? Yeah. Done? Is it clear to you? I'll repeat it. It's luego llevo a mi hijo a su escuela. Exactly. Is it clear to you? Yeah. Okay. It's close to my job. मतलब आप बोलते हो कि मान लो आपका सन स्कूल में है, आप बोलो कि इट इज वेरी क्लोज टू माय सर्विस, इट इज वेरी क्लोज टू माय ऑफिस, माय जॉब, जहां मैं जॉब करता हूँ. इस्ता, इट इज क्लोज टू माय हाउस, इट इज क्लोज टू माय जॉब, जहां मैं नौकरी करता हूँ. इज इट क्लियर टू यू? सो इस्ता, दिस इज, इट इज. इस्ता, cerca is my near, lejos is my far away. Okay, is it clear to you? We have done. Yeah. We have done. It takes 3 minutes to Lejos get is my there. far, cerca is my near. So I will say, esta cerca de mi trabajo. Trabajar, we have done work. It is very near to Yeah. my work. So what I will say, está cerca de mi trabajo, of my work. Is it clear to you? Yeah, It's clear. close to my work. तो मैं क्या बोलूंगा? Está cerca de mi trabajo. Está cerca de mi trabajo. It's very close to my house. Sorry, to my work. Is it clear to you? Yeah, it's clear. Sure. Está cerca Hmm. de mi trabajo. Exactly. Está cerca de mi trabajo. अच्छा, अगर आप कहते हो my daughter is in sixth grade and my son is in second. Now, for example, you will say sixth grade. So very simple. Mi hija está en sexto grado y mi hijo en segundo, second. Sexto is my sixth, grado is my grade, y and my son is in Sexto second. is my six. Sixth. Okay. So mi Okay. hija está en sexto grado. Okay. Y mi hijo en segundo and my son is in second. Is it clear? Very simple. Yeah. I'll just Mm-hmm. Mm-hmm. Is it clear to you? Is it clear to you? repeat it. Mi hija, Hmm. yeah. Mi hija está en sexto grado y mi hijo en segundo. And my son is in second. Is it clear to you? Okay. Now Okay. I will say they are both. What to say both in Spanish? Both. They are both good student. Both. Ambos. Both. Ambos are क्या होता है? Son हम कहते हैं ना, eos eas son. Son हमारी शेर conjugation. Yeah. तो ambos is my both. So they are both. Ambos son buenos, good estudiantes, student. Ambos son buenos estudiantes. Is it clear to you? Okay. They are both good students. Exactly. Ambos. देखो मैं क्या बोलूं, both are good student. Both are. Ambos, both. Ambos, दोनों. Ambos Both. son Ambos son buenos estudiantes. estudiantes. Is it clear to you? Okay. Is it clear to you? Tell me yes Yeah, or no. this is clear. This is clear to me. Yeah. Is it clear to you? Yeah, Now this I is will clear. say my daughter usually what to say, because these are the technical terms which I'm trying to explain to you. I'm saying my daughter usually sings her favorite song while I drive. Now while, देखो, that how the language come. Ab my daughter
You know mi hika, समझ आ रहा है आपको सारा? Usually, let me pen down. Mi My hika daughter usually suele, sings. Okay. usually suele. These are the terms which you have to practice for this. Suele. Mi hija suele cantar. Sing. Gana gana. Cantar. Cantar. Cantar is my sing. Is my verb to sing. Her. Sus. अब यहाँ पे sus क्यों लगा? सु क्यों लगा? क्योंकि songs जो है ना उसके उसके songs प्लूरल है तो यहाँ पे sus लग गया. सु नहीं लगा फिर. His और her में हम सु लगाते हैं. सु लगाते हैं. सु. Right? My daughter usually sings her favorite songs while I drive. देखो. Mi hika suele. Suele usually. Cantar is Okay. my verb to sing. Sing. अब यहाँ Okay. sus क्यों लगा? Sus means her. हर लेकिन सु Because भी yeah. because these are songs Because are she is a female. no she's a female but songs are plural songs उसके Oh. songs है ना her favorite songs Hmm. clear तो songs is Hmm. my plural तो sus लग जाएगा plural में clear Okay. sus Okay. canciones is your गाने songs अब Songs. Okay. canciones क्यों है क्योंकि s से होगा क्योंकि songs plural है और sus plural sus canciones favoritas favorite while Okay. while we call as mientras see we have verb conducir. I will explain to you what is condusco. I will explain to you. It means drive. Yes, but I will explain to you the conjugation of condusco, right? So repeat after me. We have a verb conducir. Very important. These are see आपको दिख रहा है जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लेवल बढ़ता जा रहा है यह लेवल बढ़ रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है और आपको उसका पूरा जो भी वीडियो आपको मिल रहा है आपको पूरा प्रैक्टिस करना उन वीडियोस का 10 टाइम्स जितना को टाइम लगे आई एम नॉट सेइंग यू टू गो विद नॉवेल्स अभी इट इज जस्ट यू हैव टू सी द वीडियोस एंड यू विल कम टू नो राइट सो conduce we have a verb conducir conducir is my verb to drive conducir ओके is my verb to drive karna to drive is it clear to you so if I will say to I drive yo conduce होगा yo that's a rule तो मेरा conduce होगा conduce z लगेगा z conduce नहीं होगा मुझे स का साउंड लेके आना है तो conduce speak up yo conduce speak up please यो कॉन्ड्यूस को आगे सेम और रहेगा तू conduces simple खाली कॉन्ड्यूसेस ये सिंपल लगेगा ओ ई एस लग रहा है देखो आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है ओ ई एस की एंडिंग होती है क्लियर हो रहा है एल एरिया क्या हो जाएगा कॉन्ड्यूस से खाली मेरा यो के केस में जेड लगेगा उसका भी रूल है क्यों है जेड लगेगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे जेड नहीं लगाओगे तो कॉन्ड्यूको हो जाएगा क्योंकि सीओ का साउंड क है तो हमें स का साउंड बनाना है इसलिए हो जाएगा कॉन्ड्यूस्को इज इट क्लियर टू यू ओके या इट्स क्लियर टू so मी yo कॉन्ड्यूस्को because we have o ending two conduces el ella conduce ही शी nosotros ड्राइव yes nosotros conducimos emos ending imos you know ending का formula क्या है o e s e emos okay is then करेक्ट conduces and एंड conduce वोसोट्रोस conduces and conducen so कॉन्ड्यूसेस what is the formula of ironing verb o e s e emos is in so repeat after me yo conduzco tú conduces él ella conduce nosotros conducimos vosotros एंड conducís वोसोट्रोस कॉन्ड्यूसेस and एंड ellos ellas योस यास conducen कॉन्ड्यूसेम is it clear to you यस is it clear to you clear यस इट्स क्लियर टू मी so यही तो वो बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि while I drive while mientras I drive क्या है conduce को वो क्या कह रहा है कि mi hija usually suele cantar my daughter usually sings mi hija my daughter suele usually sing cantar sus canciones his songs favoritas
favorite mientras while I drive. Mientras conduzco. Is it clear to you? Conduzco. Mi hija suele cantar sus Mhm. canciones Mhm. Favorite. favoritas, Mhm. favoritas Mientras conduzco. mientras conduzco. Conduzco. Is it clear to you? Yeah. फिर आप बोलोगे और my son usually sleeps, बट जो मेरा सन है वो यूजुअली स्लीप करता है Mm. गाड़ी में. इज इट क्लियर टू यू? Yeah. So वो होगा हाँ बताओ. mi hijo हम्म. mi hijo suele dormir. suele suele mi hijo suele suele dormir. Shit. कहाँ जा रहा है ये? तो mi hijo suele mi hijo suele dormir. dormir dormir is my verb to sleep. dormir suele dormir. dormir is my verb to sleep. Is it clear to Okay. you? ये बहुत ध्यान से समझना है आपको एक चीजों को, बहुत ध्यान से. Is it clear to you? Suele means usually. Exactly. Suele is usually. Suele usually. Fine. Is it clear to you? अच्छा फिर Yeah, आप बोलते हो कि I arrive at office around 8:30 for example. क्या बोलते हो कि I arrive at the office 8:30 AM. मैं काउंटिंग अभी नहीं बताई है तो अभी आपको सिंपल 8:30 ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमने काउंटिंग नहीं करी है. Is it clear to you? Is it clear to so you? yeah, it would be llegar. Very good. Llego. So Very good. Llego. yo Llego a la. llego a la oficina हम्म. a las 8:30. Is it clear to you? वैसे हम बोलते हैं Yeah. 8:30 बोलते हैं ओचो ई मेदिया, लेकिन अभी मैंने नहीं कराया आपको. सो ओचो ई मेदिया बोलते हैं. अभी आप काउंटिंग कराऊंगा आपको मैं. और हाँ वो टाइम. काउंटिंग जब होगी तो और क्लियर हो जाएगा. येगो आला. हम यहाँ पे ऑफिस यो नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं यो येगो. हाँ लगा सकते हैं बिल्कुल. ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ. Llego a la oficina a las. Speak up please. यो येगो आला oficina a las 8 a las हाँ a las 8:30. 8:30 is something like 8:30. I will explain to you कि counting and कैसे time table check oh, करना है. that's okay, that's okay. Okay, so ये को समझ आ रहा है. अब आपको आप खुद बनाओगे. अब आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल कि आप एक चीज बोलते हो. I say good morning to all my workmates. लिखो आप. I say good morning to all my workmates, to all my co-workers. I say good morning to all my co-workers, All my colleagues. all my colleagues. Okay, so what what you say? So have you done desir verb? Desir verb. Have you done desir verb? Yes, yes, we do. करिए ना. Yo digo, tú dices. करिए ना. Yo digo. Yeah, yeah, मैं कह yeah. रहा हूँ कि I say good morning to all my. तो मैं बोलूँगा कि les digo buenos días. करते हो ना buenos días. Digo buenos Buenos días. días a todos, to all my colleagues. A todos, to all, todos my. मिस क्यों आ रहा है क्योंकि बहुत सारे colleagues हैं. मिस compañeros. Compañeros is your colleague, co-worker and co-mates. Is it clear to you? Okay. I'll just repeat it. Compañeros. Les digo Compañeros. buenos días a todos. De trabajo. A todos Mhm. mis Mis compañeros. Yes, compañeros is your co-worker. अगर आप कह रहे हो कि मेरे ऑफिस के वर्कर्स तो दे trabajo, जो मेरे साथ काम करते हैं, तो les digo, I say to all good morning. So les digo buenos días a todos mis compañeros de trabajo. Les digo buenos días a Or today you todos can mis say compañeros de yes, trabajo. exactly. De trabajo. De trabajo, and you will say De trabajo.
and then you will say, and then have a big cup of, and then or tub, and then or tub, and then वो ध्यान करना a luego, and then e is my and, e is my Yeah. and, luego is my then. Okay, I will write in English also. 1 second. Yeah. And then have a big cup of hot coffee. Y luego, tomar is my verb to take. You know, tomar. Tomar is literally meaning of tomar is to take. To take a coffee, to take blah blah blah. Tomar. Cafe. Okay. तो मैं क्या बोलूँगा? Y luego then tomo, because your tomo होगा una gran taza de café. Taza is your cup, glass, cup of tea. A big cup of tea, big cup of tea. Gran taza. हाँ, caliente, Big. garam. Caliente is hot. Taza is basically your cup. Gran is big. Taza is cup. De cafe is a coffee. Caliente Yeah. is garam, hot. Y luego tomo una gran taza de café caliente. Is it clear to you? Mm. Is it clear to you? Yeah. I'll just repeat it. Y luego tomo una gran taza de café caliente. Hmm. Caliente. Caliente is your garam. Is it clear to you? Mm. Is Yeah. it clear to you? It's clear to me. Now you will say, I turn my computer and read my emails. करते हो ना आप? आपने जैसे you are आपने you are professional, right? You already work. So what you are turn on your computer, okay? So Yeah. we have a verb. Okay, let me give the verb. So we have verb basically we'll use in enciendo. I will explain to you. I will give it to you. Okay, I will give it to you 1 second. So let me pen down. Enciento means read. No. Enciendo is not your read. Okay. Enciendo is your turn. Whenever you are turning on something, that is enciendo. Enciendo. I will tell you because this is a verb basically. Is it clear to you? Okay. Yeah. So basically, we have verb encender is to turn on. You know, turn on the light, switch on the computer, switch on the light. That is, you have verb encender. So basically, encender is verb to and to light, to turn on the light, to switch on the computer, to switch on the light, to switch on basically. Is it clear to you? So I'm Yeah. saying enciendo me, I. So enciendo banega na mera because we have e is converted into I, enciendo, right? So Yeah. enciendo mi computadora. I open my computer, I turn Computadora. on my computer. तो enciendo, encender वो अब ध्यान रखनी है आपको, because today the topic is very important. So I'm saying encender is my verb to turn on, right? So enciendo mi computadora y leo mi correo electrónico. Y leo, read. We have done leer verb. Leer is my verb to read. Electronico means email. correo electrónico होता है electronic email, because email is an electronic, right? Electronic. Yeah. So correo electrónico, so it means electronic email. Correo email को हम बोलते I'll हैं just repeat. correo It's electrónico. enciendo mi computadora y leo mi correo electrónico. Yes, leo क्यों हुआ? Because we have a verb leer. Have you done leer verb? Yo leo Yeah, tu, late. Yeah. right? Yeah. So that how, if you have a verb conjugation which explains, if you do practice for this, definitely you will make a sentence. So I'll say in, अब आपको एक verb और पता लगा, in there. So in there is my verb to switch on. Is it clear to you? Encender is my verb to switch on. Is it clear to you? Yeah. Now you are saying, some days I have a lot to do. Read, I have lot to read. जैसे आप कहीं बहुत busy होते हो. Algunos días. Some days. Algunos días is some days. फरहाद भाई, आपको ना ये सेशन बहुत बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ना ये सुपर इंटेंसिव सुपर मॉड्यूल है ये इस टाइम पे.
तो हाँ भाई मुझे लग रहा है। टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में, some days I have a lot to read बोलते ना, some days I have a lot to read. So how you will express yourself in Spanish? You say algunos días tengo, I have, tengo, you know, tengo tener verb, tener verb. हम्म, So I have, tener yes, tengo mucho que leer, mucho, lot of to read, mucho, mucho que leer. तो algunos tengo mucho que, algunos días tengo mucho que leer. algunos días tengo mucho que leer, ये leer, 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 leer. leer, leer. Is it clear to you? Double E, it's A. E is also A, right? हम्म, फिर अगर soon, जल्द ही, soon, मुझे एक कप ऑफ टी और चाहिए होगा. soon I need another cup of coffee. Yes, तो क्या बोल रहे हो? Pronto, pronto is my soon, Soon, जल्द ही, soon. pronto. So we have necesito क्यों है? Because फरहाद भाई, we have verb necesitar is my verb. To necessity, Yeah. to need, necesitar. ये आपको मॉड्यूल रिवाइज करना है एंड आई विल टेक योर टेस्ट आल्सो, बिकॉज़ जितना भी हमने अब तक किया है, आई विल टेक द हाँ टेस्ट, यार वो जरूरी है, टेक अ राइट? टेस्ट यार. Yes, pronto necesito otra is another, otra taza de café. जल्द ही necesito otra taza de café. Pronto necesito Mhm. otra taza de café. Yes. Taza means Cup. and soon, pronto soon. Necesito Yes. need Yes. another otra. Mhm. Taza is cup. Yes. Exactly. Is it clear to you? कि pronto necesito otra taza de café. Is it clear to you? So we have verb necesitar is to need. Is it clear to you? Necesitar, yeah. तो देखो, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ. अब करना क्या है अभी? सुनो, listen to me very carefully. तो ये सेशन में रिकॉर्ड करके क्यों भेजता हूँ? Because I want you to read multiple times, right? हाँ. तो To be honest, मैं आपको honest बता रहा हूँ. अभी मेरे 1 month भी नहीं हुआ है अभी. लेकिन अगर जितना मैंने करवाया है ना, अगर आप उसका पूरा उसको समझ लो, आप प्रॉपर 10 टाइम मेरी वीडियो देखो अगर आप, तो आप उस लेवल पे आ जाओगे जहाँ पे आप स्पेनिश एक बोलना शुरू कर सकते हो. टेल मी यस एंड नो. या बिल्कुल ट्रू, देयर इज नो डाउट. मैं वही कह रहा हूँ आपको. आपको करना क्या है? आपको मेरी इस वीडियो को 10, 20, 30 टाइम्स देखना ही देखना है. मेरी जो अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको दी है, उसको भी देखना 20, 30 टाइम्स, क्योंकि अब आपका मॉड्यूल आगे बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, राइट? सही है, ठीक सही है. है. तो अब एक काम मेरे करना ख्याल से है. 2-3 दिन में एक टेस्ट हो जाए यार. मैं आपको लेता हूँ टेस्ट. कमिंग फ्राइडे आई विल ठीक है, टेक योर टेस्ट, राइट? ठीक है, या ठीक है, कमिंग डन है. थर्सडे आई कैन टेक, थर्सडे इज टुमारो, डे आफ्टर टुमारो. थर्सडे डे आफ्टर. थर्सडे आई कैन टेक योर टेस्ट. ठीक है. एक ठीक है, ओरल टेस्ट लूंगा, स्पीकिंग करेंगे हम उसमें. हमें साथ बोलना कुछ इसी टॉपिक पे बात करेंगे. सही है, ठीक है. सही है. इसका मैं आपको वीडियो अभी शेयर करूंगा आज ही. एक ना मेरा बैच है हाँ 9.30, मुझे कर दो यार. द गाय इज वेटिंग फॉर मी. ठीक है. ठीक सो है. आप इसका प्रैक्टिस करना फरहाद भाई, पिछला भी जितना आप कर सकते हो. एंड डेफिनेटली अब आप अगर आप इन वीडियोस को मेरे को ईट कर जाओगे ना आप, तो आपको एक लेवल हम्म, मिलेगा, आई एम श्योर. दिस इज सुपर इंटेंसिव वर्क. चलो ठीक है. ठीक है. एंड फ्राइडे, थर्सडे आई विल टेक योर टेस्ट. कल आपको मैं एक और अच्छे मॉड्यूल की ओर लेके जाऊंगा, व्हिच यू फील वेरी इंटरेस्ट, वेरी 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 गुड फॉर यू. बट प्रोवाइडेड पिछला आपको पूरा लर्न हो, क्योंकि यहाँ पे देखो नई वर्ब मिली है आपको, राइट? हम्म, Is सही it है, मैं switch करता on हूँ. the light switch on the computer? Is it clear to you? या Is it clear to you? या Ancient दिस इज क्लियर days. टू मी. Clear? या. चलो, I will meet you tomorrow. आफ्टरनून में ही हम मिलेंगे. ठीक है. ठीक है, अराउंड डन 4 में आपसे मिलूंगा tomorrow. ठीक है. डन हो गया, डन हो गया. Okay.